Hello students, today we are learning a new topic, inductive effect. Now, what is inductive effect? When electron withdrawing group or electron releasing group attached to the carbon series leads the formation of polar bonds, which is permanently replaced by the sigma bond, is called inductive effect, also called as I effect. Now, types of inductive effect. टू टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट. जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होता है. कौन से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. जबकि प्लस आई इफेक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं. अब मैं सीरीज बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं. ठीक है, तो Nr3 प्लस Sr2 प्लस NH3 प्लस NO2 प्लस 2 SO2R CN COOH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एल्कोक्सी एंड हाइड्रोक्सी. वैसे ही प्लस आई के लिए भी होते हैं ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप O माइनस COO माइनस CH3 का होल ट्वाइस C CH3 होल and CH3 CH2 and last CH3. अब जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं उनकी सीरीज कैसी होती है कार्बन की. सपोज वी हैव 5 कार्बन सीरीज 1 2 3 4 and 5 and a group which is electron withdrawing group is attached. Electron withdrawing group having delta minus and carbon have delta plus. In this case, ongoing series, the delta plus decreases, the value of delta plus decreases. So we can say that the withdrawing groups attached to the carbon have most amount of delta plus, where in this case Y, which is attached to the carbon series having delta plus value and carbon have delta negative value. In ongoing, the delta negative value decreases. Point third, minus I is directly proportional to acidity. Whereas plus I is inversely proportional
to acidity. Minus I is inversely proportional to 1 upon BCDT. And plus I is directly proportional to BCDT. Now we do one question. Explain why acetic acid is more acidic than propanolic acid. So we know that acetic acid have 1 degree of carbon atom. We write, and whereas propanolic acid have 0 degree of carbon atom. So by plus I effect, in acetic acid there is less I effect, plus I effect, and propanolic acid it has more I effect. Now we know that acidity is plus I effect is inversely proportional to acidity. So there is less I effect, have more acidity, have more acidity, and more I effect have less acidity. Hence the acetic acid is more acidic than propanolic acid.